Welcome back, friends. Let's see. Next, we'll be studying the verbs based on transitivity. Fine. Verbs we will study based on transitivity. Now, the meaning of transitivity is like we are dividing verbs into two categories. That is transitive verbs and intransitive verbs. Fine. You must have studied in your schools also. Okay, what is transitive verb and what is intransitive verb. है ना? But now we will be I'll be explaining you in detail. So let's understand. First, we will write the definition transitive verb. Okay. So what are transitive verbs? See, verbs that require an object, to make a complete sense. Fine. To make a complete sense means a verb that require an object to make a complete sense. मतलब इसको जो है वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है तब उसका पूरा मीनिंग निकल कर आता है. ठीक है. सिमिलरली intransitive is verbs that do not require. 1 minute, we'll take it in singular, है ना. Verb that requires, and here verb that does not require an object to make a complete sense. Fine. That means the verb appears complete without object. है ना. Verb appears complete without object. Fine. This is clear. है ना. I just read and explain it again. That verb that requires an object to make a complete sense are called ट्रांजिटिव वर्ब. ऐसे वर्ब होते हैं जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है टू मेक अ कंप्लीट सेंस. है ना. दे आर ट्रांजिटिव. इनट्रांजिटिव्स आर दोज वर्ब दैट डू नॉट रिक्वायर, दैट डज नॉट रिक्वायर. फाइन. दैट डज ओके. वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक अ कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब. है ना. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर. देखो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है आपका सेंटेंस का वो कुछ इस तरह से होता है कि सब्जेक्ट, देन वी हैव verb, then we have object. Subject, verb and object. है ना. यहां पर क्या होता है सेंटेंस आपका सब्जेक्ट प्लस verb. That's it. कई बार ऐसा होता है सब्जेक्ट प्लस verb, या कई बार इस तरह से होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यू कैन राइट प्रीपोजिशन. है ना. प्रीपोजिशन एंड उसके बाद आप बोल सकते हो कुछ एक्स्ट्रा वर्ड में जैसे आप लिख सकते हो कॉम्प्लीमेंट्स. है ना. कॉम्प्लीमेंट्स. अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट के अलावा अगर कोई आपके वर्ड्स आ रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं, फ्रेजेस आ रहे हैं, तो वो हम लोग कॉम्प्लीमेंट की कैटेगरी में लेते हैं. ठीक है ना. वी टेक इट इनटू अ कैटेगरी ऑफ कॉम्प्लीमेंट. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. है ना. लेट्स अंडरस्टैंड. तो इसमें हम लोग देखते हैं. सपोज मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं. शी. ओके. ये हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. यहां हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट प्लस ओनली वर्ब. फाइन. अब इसमें हम देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल. शी रोट व्हाट. अब आप देखना यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की यहाँ पर उसको रिक्वायरमेंट लग रही है. मतलब शी रोट, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है दिमाग में. है ना. शी रोट व्हाट. अगर मैं यहीं पे एंड अप करता हूं तो ये आपका एक इनकम्प्लीट सेंस देने वाला है. फाइन. इनकम्प्लीट सेंस देगा तो क्या होगा? शी रोट अ लेटर हो जाएगा. शी रोट अ लेटर. तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें वी नीड एन ऑब्जेक्ट टू मेक अ कंप्लीट सेंस. फाइन. उसके अलावा जैसे वन मोर एग्जांपल वी कैन टेक ही एट. है ना. ही एट व्हाट. अगेन क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड व्हाट. तो ही एट
what you can write? An apple. He ate an apple. Similarly, let's take one more example, like they build. They they built. So they built what? What do they build? They build a house. Fine, they built a house. Again, you need an object. You need an object in this type of sentences, है ना? So suppose if we skip the object, अगर हम यहाँ पर object को skip करते हैं या object नहीं लिखते हैं, तो does it make sense? Does the sentence या does the verb have any meaning? Wrote what? No meaning, है ना? So it require an object to complete its sense. Fine, this is clear. Let's understand now. There are some sets of verb which appears complete, which are complete even without object, है ना? Object is not required, है ना? For example, let's take an example. The baby slept. Now, do you require an object here? The baby slept. Now, do you require to answer a question what? The baby slept what? Not required. That means it is complete in its sense. है ना? This is intransitive verb. Similarly, if I write they laughed loudly. If I write they laughed loudly. Now, they laughed, and please try to answer the question what. So they laughed what? Is it required? Not required. Now you will say what is loudly? So loudly is here adverb, है ना? And loudly is here adverb. We can write adverb also. We can add some other words also. But object is not required. Fine. Object is not required at all. Fine. Let's take one more example, like birds fly in the sky. Birds fly in the sky. Now see, birds fly in the sky. Now in the sky is not your object. Fine. मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करना है. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट ऑलवेज गिव्स द आंसर ऑफ व्हाट. इट ऑलवेज गिव्स द आंसर ऑफ व्हाट, है ना? उसके अलावा कोई सेट्स ऑफ वर्ड्स आपके आ रहे हैं तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट, or that is you can simply call some extra words, है ना? But it is not an object. Fine. So birds fly. Now in the sky या कुछ और भी ऐसे words आते हैं तो that is not object, है ना? So I hope this is clear. I repeat once again, transitive verb, they require object. Verbs that require object to make a complete sense, they are called as transitive verb. And intransitive verb, they don't require object to complete its sense. That means they are complete, है ना, without object. Fine. Let's move on to the next set of words.